YouTube name. Rupesh Riya. YouTube channel name enduwa? Arpo. Iyo. Malayalam kursi Arya. Because Rupesh Riya. Kau force them to subscribe my channel. Subscribe कर दो मुझे 50 subscriber चाहिए और. Hi, hello. Namaskaram. नमस्कारम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग हैं आलापुरा में इन गॉड्स ओन कंट्रीज वेनिस ऑफ द ईस्ट। सो लॉट ऑफ बोट हाउसेस हियर और आज यहाँ पे बोट रेस होगा। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू द प्लेस वेयर द बोट रेस इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड हियर इन नेहरू ट्रॉफी इन आलापुरा। आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। हाउ एम आई लुकिंग? Yeah, looking nice. Oh, nice or funny? Funny. Hi. Friendly people, as always. Alappuzha always have friendly people out here. Whenever I come, I get that welcome in a friendly way. So guys, meet our friend Paul once again. He is the one who brought us here to this site where we can see the boat race. So thank you, Paul. So how do you feel? This is your first boat race here in Kerala, right? Yeah, I feel amazing. Watching the boat race, and yes, I have been in Kerala since last 5 years, yet I have never seen this boat race because of Pralayam. There is the flood in 2018 as well as because of COVID-19. But this year 2022 the boat race is organized, and I'm here watching this thing. And yeah, I mean, I found this place. Okay, namaskaram. मुझे नहीं पता ना कैसे। आरपो इयो ओके ठीक है ओके पोली see, I know some Malayalam guys, some Malayalam skills. So I mean, those area is for VIPs and we need ticket to go there, but here it's free, so we don't know about the ticket thing. We knew, but my friend told me that we can find a free place, so we came here. So this area is basically free, we don't have to pay. So yeah, so the boat is going to be starting from there, I mean the race, and it's going to be ending there. So those areas are basically expensive places since the boat race is ending there because it is a finish line, and this is the starting. I mean we are in between, and it's really hot here in Kerala. I mean Kerala's tropical climate, tropical temperature out here because we are close to equator. So it's really hot. We can get sometimes we can get sunburn, and sometimes we can get fainted, and we can get unconscious. And we are here. Yes. Rupesh Riya. Please subscribe. How many subscribers? 10,000. 10,000? Yeah. Wow. Keep uploading. Full support. So basically those team looks different and those team look different. Every team have their own different colors. I mean those are blue team, that is yellow team. I don't know the names because it's written in Malayalam and I don't know how to read Malayalam. So this is the police boat, and that's the media. They are covering, I think, live coverage of these events going on here. So with me is Kondrai here, and we are using Khasrang's umbrella because we do not bring our umbrella. So, and we are in the end of this race, right? We're in the end. Beginning. Where? Yeah. I mean, we're in the beginning. I mean, starting area, right? Yeah. So here there is very few people, but the thing is we don't have any shade here, so we had to use the umbrella.
But the advantage and the positive side of this place is we don't have to pay even a single rupee to come here because this area is basically free. How many teams are there by the way? So many. See those elephants. I think you can't hear me because of the noises here. Basically, he is Alsing. I'm Adik Lofting. Yeah. So I just met him. So just go and follow him on Instagram. I think I'll be giving his link if he give me his number maybe. So yeah, we are here watching this amazing place, and I just met him now. I mean, few minutes ago, right? How many? Maybe 30 minutes ago. Yeah. So you're from here, right? Alappuzha. I'm from actually Alappuzha. So yeah, how do you feel? Okay. How do you feel like? It's like the competition. Yeah. It's mainly happening in This Kerala. is Nehru Trophy, right? Yeah. So it's happening after around 3 years. Yeah. Because in 2018 it was Pralayam and then COVID-19. Yeah. So after many years. Yeah. So yeah, nice to be meeting you. Oh, nice to meet you. Hi. Perena. Perena. Nasim. Namaskaram. Hi. Friendly people out here, guys. As I told always, like Kerala is one of the most safest and most friendliest place in India. So yeah, you must come visit and see the next boat race. Maybe next year. When is the next? Yeah. Next year. Every year they have. Every year. It's, So this is the 67th, something like that. How many? So it's happening from the old time. oh, since ancient times. Okay. Yeah. Okay. So yeah, these kids are really brave. They are going inside the water. Amazing. Hey, so crowded, guys. Oh my god. And it's noisy as well. Vlog ആണ്. Come on guys, come on. Perena. YouTube. YouTube. പേര് name. Rupesh Riya. Okay. Okay. YouTube channel name enduva? Rupesh Riya. This is chaotic here, guys. Oh my god, lot of noise and chaotic, but I love this. This is good for the content, guys. तो बेसिकली GoPro का चार्ज खत्म हो गया, मैंने लाइक एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लिया, तो I think I have to end the vlog here. So that's the Nehru Trophy area where they get the award. The 1, 2, 3, yay! Come on, yay! Come on. Everyone is friendly here, guys. Oh my god. I got a punch from the everyone is camera friendly, so it's a good thing for me. I have no height, guys, so I can't go like and show you guys what's going on out there in the backwaters, but yeah, I can show you what's going on behind the stage, behind the like racing line, you know. It's so crowded and noisy.
Oh my god. I'm not walking, guys. I'm just flowing with the poos. Almost. Excuse me. Oh, finally. To the exit point. It's crowded as well. Yeah, this is the place. Then they have to come here. Just call them, na? So guys, Chata, how much? 150. So guys, अभी हम लोग Alappuzha beach में हैं and he wanted to like ride that horse, but it's like 150 rupees just to go there and come back. So it's quite expensive. So we are not riding the horse. हिंदी से ब्लॉग बनाने का कोशिश था, लेकिन हिंदी से ब्लॉग मैं नहीं बना सकता. So that's my negative side. Namaskaram. Namaskaram, bhai. Namaskaram. How are you? I'm Sugam. Where is your place? Northeast India. Northeast Yeah. Pere na? Eh? Pere? Peri. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Tumara? Hayran. Nian Rupesh Riang. Hayran. Hayran. Yes. How are you? A vlog? Sugam. Sugam. Malayalam kursi area. Because Channel name what? Rupesh Riang. Phone number. I just forced them to subscribe my channel because I want subscriber. I need 50 more subscribers for 10,000 subscribers. Congratulations. So please subscribe, okay? Okay. Yes. So you have any Instagram name? Of course. Devil Boy. Blacky this pedi. Just comment in the videos, then I will Pin you. yeah, pin your that comments, okay? What's your? Please say RUPESH. RUPESH. Yeah, RUPESH Rupesh. space REANG. Okay. Yes. This is your account? Yeah, that's my account. Okay. Yeah. Just comment, okay? Comment and just say we met in the beach of Alappuzha. Then I will pin your comment and follow you back on Instagram. Okay. Bye. Okay. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. So got another subscriber. Yay! But I just need 50 more subscribers to hit 10,000 subscribers. I mean, yo, I have been working hard to get this much of subscriber, and right now, finally, I'm going to be hitting 10,000 subscribers very soon. The only thing between me and 10,000 subscribers is I need more 50 subscribers. And yeah, guys, I have worked a lot for this achievement, you know, 10,000 subscribers, not less. He have helped me, they have helped me, and everyone have helped me, and you guys have helped me to attain this number of subscribers, because you subscribers are the one who made me believe that I can gain this much of subscribers. And right now I'm quite confident that I am a YouTuber with 10,000 subscribers, you know. I mean, if you subscribe, you'll become 10,000 very soon. So guys, right now we are here in Alappuzha beach, and this is the place where I always come. I mean, whenever I get time, I always come to Alappuzha beach. So guys, right now we are just seeing the sunset here in Alappuzha beach. The sun just entered the ocean in the Arabian Sea. Feeling so happy to see the sunset, because you know, since 2-3 years I have not been seeing the sunset, because हम लोग हॉस्टल पे था और हॉस्टल पे सनसेट देखने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन आज देखा तो कैसा लगा सनसेट? बहुत अच्छा लगा. हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में था ना, हम लोग हमेशा देखता था कि सन पर्वत के नीचे से जाता था ना, बट इस बार हम लोग देखा कि लाइक पर्वत का नीचे से नहीं, इस बार पर्वत का नीचे से नहीं, आज इस बार समुद्र के नीचे से सूरज को ढलते हुए देखा. हाँ, डूबता हुआ देखा, ढलते हुआ देखा, तो बहुत अच्छा लगा. हाँ, हिंदी से ब्लॉग बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन इंग्लिश से बना रहा हूँ फिलहाल, लेकिन हिंदी से बनाऊँगा क्योंकि मेरा हिंदी इम्प्रूव हो रहा है. मुझे लगता है कि हो रहा है ना, होने वाला है, हो रहा है. So the sunset is beautiful. I love the sunset. I love seeing the sunset and the sunrise. That's what I was when I was in school. That's what the real Rupesh Riang was, who loved seeing the natural things like the sunset, sunrise, and those who love enjoying the nature, like anything, like who used to be happy with the rain. But जब से like class 10 पास किया हूँ, तब से बहुत struggle कर रहा हूँ with my studies, and I don't want to study, you know, but I had to. So basically अभी तो science में हूँ, तो
8 more months, after 8 more months I am finishing my education. After that मेरा प्लान है कि मैं दुनिया की हर जगह में जाके, हर कोना में जाके ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन पता नहीं ये सच हो पाएगा कि नहीं. बट आई वॉन्ट टू डू दिस लाइक नोमैडिक शुभम या फिर नोमैडिक इंडियन या फिर कोई भी ट्रैवल हो, उनकी तरह मैं भी ब्लॉग बनाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड डू दिस. राइट नाउ आई एम हियर अराउंड 3000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम, ब्लॉगिंग, फीलिंग गुड. और मेरे साथ ये भी है, बचपन का दोस्त भी है. इसका भी चैनल है, ग्रो कराएंगे, लेकिन पहले मेरा चैनल तो ग्रो हो जाओ, उसके बाद इसका चैनल भी लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे उसके चैनल में भी. नमस्ते भैया, कहाँ से हो? हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से. नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम के पास से. आसाम के पास, आपको पता है. आप कहाँ से? इंडिया में हम भी नॉर्थ ईस्ट अच्छे से जानते हैं. आप लोग कहाँ से? मैं यूपी से. यूपी से. भैया तेलंगाना से, आंध्रा से. आंध्रा बहुत अच्छा. तो हाय बोलो मेरे सब्सक्राइबर्स को. हाँ चैनल है रुपेश रियांग. प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मुझे 50 सब्सक्राइबर चाहिए. और अभी कितना अभी मेरे पास 10 के सब्सक्राइबर करने के लिए और 50 चाहिए. 50 है. 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट तो करने के प्लीज लिए. कर दीजिए. क्या इधर केरला टूर नहीं, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स किधर चांगनासरी में एक सेंट बाक्समन कॉलेज बोल के एक कॉलेज है. Now 10,000 required for monetization. नहीं, मोनेटाइजेशन हो गया मेरा. हो गया. बस 10,000 चाहिए. 10K क्या चाहिए? फ्लैग चाहिए. तो RU ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ आजकल, क्योंकि कॉलेज में बहुत प्रेशर है. लेकिन अभी ऑलरेडी इंजीनियर नहीं हो, MSc बॉटनी कर रहा हूँ. मजा आ रहा है पढ़ाई में? नहीं, बकवास है. मुझे ब्लॉगिंग ही करना है बाद में. और भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग भी स्टूडेंट्स ही है. सेम. भैया का सब नहीं, ये लोग BSc कर रहे हैं. हम लोग सेकेंड ईयर है यहाँ पे. तो 9.95 हो गया. हाँ, मुझे 50 और चाहिए. अभी 50 सब्सक्राइब चाहिए, उसके बाद 10K यूपी में मेरा कंप्लीट. दोस्त है, वो मलयाली है, लेकिन वो इटावा में रहता है. चलो मैं औरैया. उसने बोलना औरैया का ही बंदा है. औरैया का. तरुण गुप्ता नाम है. तरुण गुप्ता आपका नाम. आपका नाम क्या है? नरेंद्र. आपका? साई किरण. सॉरी, ओके. साई किरण. प्रसाद. So nice meeting you guys. Thank you so much. हम लोग के साथ मेरा नाम रुपेश रियांग है. हैप्पी होली बोला है ना. इसका नाम रविंद्र है. मेरा रविंद्र नाम. आपका नाम क्या है? क्या? साई कुमार. ओके. हैंडशेक नहीं किया, अभी कर लेता हूँ. थैंक यू सो मच. ठीक है. Enjoy your journey. हाँ, आप लोग के लिए ये हॉलीडे है क्या? हाँ भैया हॉलीडे. इधर बोटिंग रेस देखने. ओ बोट रेस. हम लोग देख के आए इधर टाइम बारिश से गाली खत्म हुआ था. बारिश के बाद अभी आ गया. Enjoy. हाँ, Full enjoy. फुल एंजॉय. थैंक यू सो मच गाइस. ओके थैंक यू. So guys, I met a lot of people from different places from India. They came to see the boat race here in Kutanad. So yeah, it's really amazing. Nice. I'm submitting someone's video. So basically, right now we are going to be returning to our friends and returning to the hostel. So that's what we're going to be doing. I hope today I'm little confident because बहुत दिनों से मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया. I think I have not blogged for around 6 months because कॉलेज में बिजी था, इसलिए ब्लॉग नहीं किया. लेकिन अभी फिर से वो वाइब आ गया. I mean, I was this Rupesh Riyang as we blogging with this energy and strength when I was beginning. You know, I used to be blogging with the phone, and I never cared about what people think and what people are watching. And मैं वो था रे, लेकिन अभी कुछ डिफरेंट ही हो गया था. अरे यार, ओ नया हीरोस आ गया. ओ माय गॉड, ये जलवा किस्मत का है जलवा. Where's the other guys? Oh my god, ये फोन गिरा दिया. Play the song, come on. अरे नहीं, copyright claim मिलेगा. Can you give me the glasses? Yeah. This is Bikendro. No. This is Satish. They are new students, you know. This is in BSc Botany, so my junior. So this is in English, and that's Adi. You know him. You have seen him. This is रुको. This is रामू भाई. भैया जी है ये हम लोगों के साथ हमेशा रहता है. तो दोस्त ही है, स्ट्रॉन्ग है.
नेपाल से नेपाल हाँ अगर हम लोग नेपाल में जाएंगे ना पोखरा है ना पोखरा हमें कुछ हेल्प चाहिए हमें जाना है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी जाना है माउंट एवरेस्ट जाना है ना हमें तो ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे feeling really good to be here in Alappuzha beach for I think this is my last time here because I am leaving this place very soon feeling emotional but क्या करें like we have to leave this place you know and people are I think मुझे लगता है कि मैं बहुत नोइजी बन गया अभी मेरा मतलब यही तो था रुपेश रियांग जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था यही तो था दिस इज व्हाट आई वाज यू नो व्हेन आई यूज्ड टू बी ब्लॉगिंग यूजिंग अ फोन लाइक दिस आई यूज्ड टू बी ब्लॉगिंग लाइक दिस हे गाइस लाइक 2-3 years ago और मेरे पास गोप्रो आ गया था गोप्रो के बाद मैंने ब्लॉग किया था लेकिन आई वाज स्टार्टिंग टू हैव सेल्फ डाउट दैट आई एम अ फैट गाय आई एम अगली माई हेयर इज स्ट्रेट एंड धिमकाना फलाना कुछ भी सोच रहा था आई वॉज फीलिंग रियली बैड एंड आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम सो अगली दैट द गर्ल हूम आई लव दिस नॉट लविंग मी बैक आई एम अ लूजर दैट थिंग यू नो एंड स्टडीज़ के बारे में दैट आई ऑलवेज गेट लास्ट कुछ बहुत पढ़ लो फिर भी आई ऑलवेज गेट लास्ट इन एग्जाम that thought gave me this negative vibe and I thought that let me go to the gym तो मैं जिम में भी गया because I have insecurity about my body तो insecure था तो जिम में गया जिम में जाने के बाद भी I had the same shape but I realized that it's not about the body but it's what inside so हाँ I'm going to be starting the blogging again because like 6 महीने पहले मैंने बोला था कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँगा परीक्षा के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा लेकिन मुझे लगता है अभी से मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना चाहिए वापस एंड बी व्हाट आई वाज यू नो द रुपेश रियांग हु वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड सी द वर्ल्ड एंड ब्लॉग एंड लिव ए हैप्पी लाइफ एंड दैट्स व्हाट आई लव सो गाइस इफ यू हैव अ लाइफ एंड इफ यू हैव अ ड्रीम लिव फॉर योर लाइफ लिव योर ड्रीम गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय REANG so please subscribe okay yeah what is your name my name is Anandu yeah nice meeting you Anandu yeah thank you tomong chamung jora tong sanino gemai thangke sini mung sabo sengnai nono jesepano ungi tong di sinai rengnai kereng logai maya bufang tolak kosok ungza gyareng tolak kosok ungza gyareng logai maya bufang tolak kosok ungza gyareng tolak kosok ungza gyareng logai maya bufang tolak kosok ungza